So hi guys, finally we are here. We're starting with lead code, right? Finally, एक step ahead, right? जहाँ पे we can do the coding, right? मैं try out करूंगा कि we start with a live coding, ठीक है, ताकि मैं आप लोगों से interact कर सकूँ, शायद थोड़े और बेटर तरीके से देख सके चीजें, राइट? मे बी पता नहीं यूट्यूब पर लाइव कैसे और क्या चीजें होती होंगी। तो विल सी दैट जब मैं स्ट्रीमिंग करना स्टार्ट करूंगा। फिलहाल आई एम हैविंग सम प्रॉब्लम, राइट? तो आई फिगर आउट एंड सून आई स्टार्ट कि मैं लाइव आके चीजें स्टार्ट करूँ। So for now, I'm just recording it out and going to post over YouTube because I don't want to waste a time, यानी मतलब एक एक दिन भी बहुत ज्यादा जरूरी है, राइट? तो जैसे जैसे करेंगे विल लर्न एंड वैसे वैसे हम लोग चीजों को ऑप्टिमाइज करेंगे। आई ट्राई कि मैं अपनी स्क्रीन क्वालिटी वीडियो क्वालिटी वगैरह सारी चीजों पे थोड़ा फोकस करूँ, ताकि यू गाइस एंजॉय इट बाय डूइंग इट। ठीक है। And yes, so today we'll do the lead code, and it is going to be totally raw, right? So we'll be learning here only, right? I'll be figuring out a solution. Maybe learner you, I don't know how exactly to मतलब there is no best way to approach anything, right? I'll just try my way and try to solve the questions, right? And you guys go ahead and try your solutions. You can comment your solutions as well, right? And tag me there as well, right? And let me show you, like you can follow me over. You can follow me here, like on my Twitter, right? This is my Twitter account. You can follow me here, and I'll be going to share my journey here. Okay, every day I'll share ki what I'm doing, what is going to be next, right? This is where you can uh you know going to matlab you can basically follow me here, right? Now, if you also want, you can subscribe, this YouTube channel as well, right? We are going to connect every day. We are going to do every day a lead code question, at least one question every day, so that we can, at least learn something every day, right? So right now we are starting with lead code, but soon, soon we'll start with going ahead. We'll start with this project building and all everything. And this all are, all thing is going to be live, right? So that we can together we can learn everything, like what the mistake we made, what are the things we can improve with the time and all everything, right? So yeah, we're doing this. And I know ki, quality matters, right? So with the learning, we're going to improve, quantity over the quality, right? The questions right now we are focusing will be, just for the quantity purpose, right? So that we start doing it and then we'll, analyze, because once you start doing it, you start analyzing it. And once you start analyzing, you'll get the understanding what are the quality questions that you have to focus on, right? And we'll be focusing on that as well, right? We'll be preparing sheet for that and then accordingly we'll be going ahead. Okay. I hope you have seen my today's video, right? It's four step that I have provided, right? How exactly we are gonna do, right? And exactly we'll be starting with the phrase one learning soon. Okay, I'll be posting a video regarding that as well. Okay. For now, let's start with the lead code question. Okay, let me show you my account. Okay, so you can see almost you can check, okay, I am coding around, mother doing the lead code around 101 days, right? It's been 101 days since I'm coding over the lead code, right? Doing questions every day, right? So you can see my strike there as well, okay? Max streak as well, right? And yes, let's start with then question and definitely. So let's see what question we are going to do today then. We are going to do a question. I'll prefer we'll start with the easy one. Okay, so we'll be keeping easy only right now because it's somewhere I have to work on the medium question as well. We'll be starting with easy only. Okay, we'll take a math question. Already have done lot of easy questions. So I'll be taking that easy question that we haven't done any. Okay, let me check.
And it should be related to, array or something which should be related to the math only. Okay. So I'm going to take mm, 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 mm. Find the maximum achievable number. Already done. Okay. Divisible and non-divisible sum difference. This we can do. This seems interesting. We can do this. Or okay, let's do this then. Seems interesting. Hmm, seems interesting. We can do this. Okay, so we'll be doing this. Let me see if I'm recording or not. Okay, so we're doing this question today. So let's read. So this question is divisible and non-divisible sum difference, right? तो क्वेश्चन रीड करके ही समझ में आता है कि जो डिजिबल है और जो नॉन डिजिबल है उन दोनों के सम के डिफरेंस को हमें देखना है, राइट? तो यू आर गिवन अ पॉजिटिव इंटीजर एन एन एम दिया हुआ है, राइट? डिफाइन टू इंटीजर एज फॉलो। दो इंटीजर्स डिफाइन किए गए हैं, तो एम वन की जो बात कर रहे हैं दैट द नंबर ऑफ ऑल इंटीजर इन द रेंज वन टू एन बोथ इंक्लूसिव, ठीक है, दोनों को इंक्लूड किया, मतलब वन एन दोनों इंक्लूडेड है, दैट आर नॉट डिजिबल बाय एम। ओके, सिंपली ओके, नंबर वन की बात कर रहे हैं द सम ऑफ ऑल इंटीजर इन द रेंज, ठीक है। ओके, नम टू पे चलते हैं। द सम ऑफ ऑल द इंटीजर इन द रेंज ऑफ एन टू वन बोथ इंक्लूसिव दैट आर नॉट डिजिबल बाय दैट आर डिजिबल बाय एम, रिटन द इंटीजर। अच्छा, तो सिंपली बोला है वन से लेके एन के बीच में उनको इंक्लूड करके जो डिजिबल हैं और जो डिजिबल नहीं है उनके सम का डिफरेंस निकालना है, राइट? दैट्स द क्वेश्चन इज। तो अगर इसमें हम सीधा एक वो देखें तो दो हमें दिए हुए, राइट? तो ये रहा 10 है, 10 का अगर हम चेक करें, लेट मी टेक अ नोटबुक। Guys, keep a notebook. Actually, it will help you to analyze better. Actually, if you start solving questions using notebook, it will help you. I'm not able to get pen. Okay. Let okay, let me see. So, firstly, in this given example, integer in the range 1 to 10 that are not divisible by 3 are. तो 1 to 10 में कौन कौन से, मतलब 1 to 10 के बीच में अगर देखा जाए कौन कौन से डिजिबल नहीं है? 1 2 4 5 7 8 10। नंबर वन इज द, अच्छा, नंबर वन इज द सम ऑफ दोज, तो उसका 37 निकल गया, ठीक है। और कौन कौन से होंगे? ऑफ कोर्स हमारे पास 3 होगा, 6 होगा, 9 होगा, एंड इनका जब सम निकाल, मतलब इनका जब हमने डिफरेंस निकाला तो वी गॉट द आंसर 19। तो इट सीम्स क्वाइट इजी, राइट? तो व्हाट वी कैन डू हियर, तो बेसिकली वी कैन चेक, चलिए ठीक है, काम करते हैं। तो नंबर 1 to n, मतलब अगर लेट्स सी इसके लिए हमें एक लूप भी यूज करना पड़ रहा है, नहीं, ठीक है। कैन वी डू विदाउट अ लूप? ओके, एक एक लूप में जाकर नंबर चेक कर सकते हैं, उसे सम कर सकते हैं, डेफिनेटली नो प्रॉब्लम। एंड विदाउट अ लूप, लेट्स डू फर्स्ट, the loop only, that will be great. uh okay, so let's take high value. Then we'll run this from, we have to run it from 1 until n, right? I plus plus, have to make it equal. ठीक है, n तक हम लेके जा रहे हैं। ओके, तो अब करना क्या है, हमें बस ये देखना है पहले डिजिबल कौन कौन से नहीं, तो इफ, तो हम सिंपली चेक करेंगे डिजिबल सॉरी, n डिजिबल, तो हम n को, तो I को, I have to do it, I mod m equal to 0, okay,
and तो आई मोड इक्वल to नॉट इक्वल to और इक्वल to बता के पड़ेगा, तो लेट्स डू दिस। हम उसका सब निकालना है बेटा, और बस हो गया। इसी में we can create some, we can take num1, that will be better, num1 num1 plus whatever the I value is here, ठीक है, and simply else go ahead, copy num2, uh, so if it is not visible, right? So I hope you guys are understanding what I'm doing, right? So I'm running a loop from 1 to n because it is saying, hey, 1 to n से लेके we have to run a loop, right? 1 से लेके n तक उसी के बीच में हमें visible और non visible दोनों find out करने, तो मैंने उसके पहले run कर दिया, right? And the I, will be running from 1 to like n तक, तो n तक I क्या होगा, run करता रहेगा। एंड होगा क्या यहाँ पे कि एवरी टाइम जब भी एक एम को हम आई से चेक करेंगे, इफ इट इज नॉट विजिबल, ठीक है, अगर वो जीरो के बराबर नहीं आ रहा है, ठीक है, देन वी आर गोइंग टू सबमिट हियर, राइट। एंड इफ यू कैन से कि दिस इट इज, इफ इट इज विजिबल, तो ये चीज यहाँ पे आ जाएगी, राइट। तो तो both num1 and num2 is ready, right? We can take this. We just need to create now a difference, right? I'm gonna take num1 as 0, तो नंबर में हम 0 डाल रहे हैं, so that सम करते हुए वैल्यू इनिशियलाइज्ड हो, और ठीक है। आई जस्ट वांटेड टू चेक कि हाँ, ये वाला एग्जांपल देखना था क्योंकि वैल्यू नेगेटिव में आ सकती है, राइट। तो इन द गिवन एग्जांपल द इंटीजर इन द रेंज 1 से 5 के बीच में जब बोला गया तो दे आर नॉट डिजिबल बाय 1, तो 1 से जो डिजिबल नहीं है दैट इज 0, राइट। तो पहले हमें नॉन डिजिबल रखने हैं, राइट, एंड देन उसका डिजिबल रखने हैं। तो इसलिए जब हम दोनों को करेंगे तो -15 विल बी द आंसर। यही चीज चेक करनी थी क्योंकि हमें डिफरेंस नेगेटिव में आएगा या नहीं आएगा, तो डिफरेंस कैन बी नेगेटिव, तो हम इसे सिंपली क्या कर सकते हैं, लूप से बाहर आके वी कैन जस्ट मेक सम वैल्यू, मैं रिटर्न ही करा देता हूँ यहाँ पे, just I'll take num1 minus num2, डन है। तो num1 माइनस num2 कर दिया। अब num1 माइनस num2 जब होगा, राइट, तो डिफरेंस विल बी देयर, राइट। अब एक बार चेक करते हैं सिंपल, इफ इट इज वर्किंग, या मैंने कुछ इसमें भी गलती कर दी है, सिंपल सी लॉजिक है। इट इज फाइन वर्किंग। लेट्स टेक वैल्यू, मैं 99 ले लेता हूँ, डिजिबल बाय 7, और ठीक है, वर्किंग फाइन। लेट्स सबमिट गाइस। तो वी हैव डन, राइट। तो by using loop we have done, almost you can see we have, got a beat of 62%। देखते हैं कितनी बीट और मिल सकती है, मतलब तो 62% की बीट है, राइट। तो ऑलमोस्ट in log n I have done it, right? Sorry, in n I have done it, okay. But you guys go ahead and see how you can optimize it, right? You can go for other solutions. Do share with me as well, right? So yeah, this was the first, lead code question that we solved, right? And going ahead, where हम लोग ऐसी और भी questions, other चीजें करेंगे, like, I'm also now part of, in the learning, तो करेंगे, we'll see, हम लोग करेंगे, सीखेंगे, और चीजें ट्राई आउट करते रहेंगे, ताकि एट द एंड वी कैन बिकम अ डेवलपर, राइट। तो वी आर गोइंग टू वर्क फॉर इट। So for now, I'll be signing off, and yes, guys, let's meet you tomorrow around same time.